Hello students, our today's topic is create cost center. इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि कॉस्ट सेंटर क्या है, तो अब हमें कॉस्ट सेंटर सैप में कैसे क्रिएट करना है ये देखना है। तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं OKEON, या फिर हम पाथवाइज जा सकते हैं सैप इजी एसेस, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, स्टैंडर्ड हायरार्की एंड चेन। SAP Assess, accounting, controlling, cost center accounting, master data, standard hierarchy and OKU and change. तो यहाँ पर हमारा हायरार्की की दिख रहा है, इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं पहले। कॉस्ट सेंटर फॉर कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की पर हमारा कंपनी कोड प्रेस एंटर। And then click on save button. Now we will create our cost center group. First we will create the utilities cost center group. So हम हायरार्की की सिलेक्ट करते हैं, देन क्लिक करेंगे क्रिएट बटन एंड लोअर लेवल ग्रुप। अब यहाँ पे आपको ग्रुप का नाम देना है TRE1 हमारा कंपनी कोड एंड डैश आपका ग्रुप का नाम यूटिलिटीज, सो UTLS एंड यहाँ पर नाम दे देते हैं utilities. Press enter. Now select utilities group and click on create button and then click on cost center. Now we will create a cost center. So enter your cost center name. हम लोग देते हैं like 1 TRE1, utilities का U and for energy EN01. हमें जैसे चाहिए वैसे क्रिएट कर सकते हैं। Enter your name, energy, copy it in description. Now enter your user responsible, person responsible and cost center category. So our cost center category is management and press enter. So ऑर्गेनाइजेशन में हमें पूछ रहा है कंपनी कोड, एंटर योर कंपनी कोड एंड देन योर बिजनेस एरिया। हम बिजनेस एरिया इस्तेमाल करेंगे TR1 ड्रिल मशीन्स। प्रेस एंटर, change your functional area that we will use. Or we will leave and enter your profit center energy. So सर्च करते हैं profit center in company code. Continue. Energy, okay. Press enter and then click on save button. हमारा डेटा सेव हो गया। Now we will check the indicators. एक्चुअल रेवेन्यू एंड प्लान रेवेन्यू ठीक होने चाहिए एंड कमिटमेंट अपडेट भी ठीक होना चाहिए।
अब हम क्रिएट करते हैं हमारा दूसरा कॉस्ट सेंटर। सो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं या आपके ग्रुप पे सिलेक्ट करके अगेन क्रिएट से भी जा सकते हैं। तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सो नाउ सेलेक्ट एनर्जी कॉस्ट सेंटर, क्लिक ऑन कॉपी बटन, चेंज नेम, फॉलो करेंगे हम सेम सीरीज 1 TRE 1, यूटिलिटीज का U, एंड फॉर गैस GA01, change the name gas, change the name in description gas, user responsible, person responsible, cost center category, click on organization, check your company code, business area, and now change your profit center to gas. Gas, check indicators also, and then click on save button. नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं वाटर। तो अगेन गैस को कॉपी कर लेंगे, सेम सीरीज फॉलो करते हैं, TRE 1 फॉर यूटिलिटीज U, एंड वाटर के लिए WA01। चेंज योर नेम टू वाटर, change your description to water, user responsible, person responsible, and our cost center category. Click on organization, check your company code, business area, for water, okay, we will assign TR1, but we will change the profit center to water. Then click on check first indicators and then click on save button. तो यहाँ पर हमारे कॉस्ट सेंटर्स बन गए हैं यूटिलिटीज ग्रुप में। नाउ वी विल क्रिएट अनदर ग्रुप फॉर प्रोडक्शन। So select our production group and then click on copy button. Our next group is TRE1. For production we will use PRDOC. Enter your name, production, press enter, click on save button. Now we will create cost centers under production. So our first cost center is angle grinder. So select cost center group, click on create, click on cost center button. Enter your cost center name, that is we will follow the same series 1 TRE1, and for production we will use P, and for angel grinder AN01. Enter your name, angle grinder, copy paste, user responsible, person responsible, your cost center category. Now production, click on organization, enter your company code, enter your business area, in the grinder, remove functional area, enter your profit center.
will check functional area. Okay, leave it and then click on save button. तो हमारा एक कॉस्ट सेंटर बन गया. नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं हम. हैमर्स. तो एंगल ग्राइडर को सेलेक्ट कीजिए, क्लिक ऑन कॉपी बटन, enter your cost center name 1TRE1 for production P HA01. Change your name to hammers and change your description to hammers. User responsible, person responsible, cost center category. Check your company code, business area. We'll change the business area TR2 hammers and change our profit center. Hammers. Press enter and then click on save button. Now we will create another cost center, that is saw. Again select hammers, click on copy button, enter your cost center name. We'll follow the series PSA01. Change your name and description to source. Enter your user responsible, person responsible, cost center category to production. Click on organization, enter your company code, change your business area to source. And change your profit center to source. Then click on save button. Now we will create another cost center. Drill machines. Again select source, click on copy button, enter your cost center name for production P, and our cost center name is drill machines, so DR01. Change your name and description to drill machines. Change your enter your user responsible, person responsible, and cost center category. Now click on organization, check your company code, change your business area, that is TR1, and change your profit center. Drill machines. Check indicators and then click on save button. Now we will create another function, a cost center group. So select cost center group, click on copy button, enter your group name TRE1-finance.
then click on press enter, click on save button. Now we will create a cost center under finance. So select the group finance, click on create button, click on cost center, enter your cost center name. We will follow the same series 1 TRE1 for finance F, and our cost center is finance expenses. So FEX01. Enter name finance expenses. Copy to description. Enter your user responsible, person responsible, and cost center category to finance. Administration. Click on organization, enter your company code, enter business area. We will assign business area drill machines. Change your profit center. To default PC. Enter and then click on save button. Now we will create another cost center group. Select cost center group to finance and then click on copy button. Enter your group name TRE1 dash marketing. Change name to marketing. Press enter. Click on save button. Again select group. Click on copy button. Enter your name. Our next group is maintenance. Press enter. Click on save button. Our next group is assets. So select group, click on copy button, enter your cost center group name, change the name to assets, press enter, click on save button. Our next group is research and development. Again select group, click on copy button, TRE1 RA and D. Research and development. Press enter, click on save button. So यहाँ पर हमारे कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स एंड कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो चुके हैं. We will assign functional area if any there. Okay, we'll assign later.